Good morning, students. So, for class 7th, I would be dictating the answers of chapter 1, the 3 questions. तो उसका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. इसका आंसर है द किंग wanted to know answers of his 3 questions in order to be a successful ruler. पहला आंसर कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट का आंसर नंबर 1. द किंग wanted to know answers of his 3 questions in order to be a successful रूलर. दूसरा क्वेश्चन है उसका, मैसेंजर्स वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है. अब है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक. जिसमें हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स. पहला है, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस. इसका जो होगा आंसर होगा, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वेयर सो वेरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेनी वाइज मैन answered the king's question, but their answers were so varied that the king was not satisfied. Answer number 2 है, someone suggested that there should be a council of wise men. इसका आंसर होगा, someone suggested that there should be a council of wise men. ये तो बुक में दिया हुआ है यहां तक. इसके आगे होगा, to help the king act at the right time. To help the king act at the right time. अब आते हैं तीसरे पे. तीसरा है हमारा, someone else suggested that the king should have a timetable. इसका होगा, someone else suggested that the king should have a timetable. यहां तक तो आपका बुक में दिया ही हुआ है. इसके आगे होगा, and follow it strictly. आंसर नंबर 4, the king requested the hermit. The king requested the hermit. और उसके बाद है, the king washed and dressed and bearded man's wound, but the bleeding would not stop. इसमें एक आंसर हम लोगों ने मिस किया है, वो 4th का. वो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा. पहले आंसर नंबर 5 लिख लो. द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. अब आते हैं हम वर्किंग विद द टेक्स्ट. इसके आंसर्स थोड़े बड़े हैं. पहला क्वेश्चन है, Why was the king advised to go to the magicians?
आंसर है इसका some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, comma, one must look into the future and only magicians were able to do that. So, comma, they advised the king to go to the magicians. फिर से बोल रहा हूँ ये आंसर. आंसर नंबर 1 वर्किंग विद द टेक्स्ट का. Some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, comma, one must look into the future and only magicians were able to do that. So, comma, they advised the king to go to the magicians. ये हो गया आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? In answers to the second question, some people suggested to seek advice of counselors, comma, the priest or the doctors or the soldiers. आंसर नंबर 2 फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इन आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, some people, comma, suggested to seek advice of counselors, comma, the priest or the doctors or the soldiers. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? What suggestions were made in answer to the third question? Answer number 3. For the third question, some people said science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. आंसर नंबर 3 फिर से रिपीट कर रहा हूँ. For the third question, some people said science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. Question number 4. Did the wise man win the reward? If not, why not? Answer number 4. No, comma, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from each other, and king was not satisfied with their answers.
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नो द वॉइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड because their answers were so different from each other and king was not satisfied with their answers. Question number 5. The king, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? मतलब राजा और वो तपस्वी ने उस घायल व्यक्ति की मदद कैसे की? द किंग वॉश्ड द वुंड and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. The king also offered the wounded man water to drink. Stop. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. Full stop. The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. इसको दो पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. आज आपको आंसर 5 तक मैंने बताया है. नेक्स्ट क्लास में इसके जो 6, 7, 8 ये 3 आंसर है वो बताऊंगा. अब मैंने जो आंसर्स लिखे हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए. पहले तो मैंने वर्बली बोला